Hello everyone, welcome to ekamiasacademy. So within this particular daily answer writing series, so now we are coming up with the next subject, that is disaster management. Hope you have enjoyed the answer writing series which we have discussed in the environment aspect. So here we are going to take up few questions regarding with which tends to appear in disaster management, and we are going to start up writing the answer on a real time basis. Okay. So this is, as you know, disaster management, as it is part of this particular GS mains paper 3. So this would be the first question which we would be discussing in the disaster management as such. Okay. So as everyone know, what we have did in environment series, the same we are going to do in the disaster management series also. First we will understand the question, then we will see the approach of question, how we will be writing it. Then we will try to write the introduction, then we will try to write the body, then we will try to write the conclusion on a real-time basis. So every aspirant who is watching this particular video, they get prepared for writing an answer along with me when I write this particular answer for the question. Okay. So in the question they have given like, what is glacial lake outburst flood? Analyze India's vulnerable to this glacial lake outburst flood. And is India prepared and equipped to handle a glacial lake outburst flood disaster as such? So in the recent era, there has been huge increase in indices of these particular great like glacial lake outburst floods. So that's the reason why this particular potentiality is very high, that this question is having more probability to appear in your GS paper 3. So if you could see what shall be the approach of the answer, as you know, we would be writing evergreen method, that is introduction, body, conclusion. ये हिसाब से हम लिखेंगे in generally, है ना. इंट्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे, so we are going to define and explore about glacial lake outburst flood. सो एग्जामिनर को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसका डेफिनेशन से, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है, तो उसका पॉसिबिलिटीज क्या है, दैट वी आर गोइंग टू राइट इट इन द इंट्रोडक्शन. सी चेक योर इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंगली विद द अमाउंट ऑफ वर्ड्स विच आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो अगर 150 वर्ड पूछे हैं तो आप 30 से 40 वर्ड में इंट्रोडक्शन लिखो. 200 वर्ड पूछे तो 40 से लेके 50 वर्ड तक, तो वो एडजस्ट कर लो अकॉर्डिंगली, है ना. तो बॉडी में क्या लिखेंगे, दो चीज लिखना पड़ेगा यहां पे. एक तो वल्नरेबिलिटी लिखो, vulnerabilities like how India is vulnerable to these glacial lake outburst floods, and Indian preparedness. Indian preparedness जो NDMA ने गाइडलाइंस दिया होगा, सो उसका जो है हाउ मच इट इज इंडिया इज प्रिपेयर्ड विद. कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड और क्या कर सकते हैं, है ना. तो ये हिली रीजन्स में और ज्यादा कुछ कर सकते हैं तो हम उसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो लिखना पड़ेगा. ये होगा अपना अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग फॉर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड. देन सो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. है ना. इंट्रोडक्शन में ए ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड इज रिलीज ऑफ मेल्ट वाटर क्रॉसिंग ए मोराइन or ice dam glacial lake. Clear? So it's a basic definition, like वो जो glacial lake होगा, so generally glacier lakes are formed in those areas where we would be finding basin areas, जहाँ पे ये glacier आके fix होगा. जब ये glacier इसमें melt होगा तो ये मेल्ट होने के बाद वी वुड बी हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर लेक्स, एंड दिस ग्लेशियर व्हाट इट वुड बी डूइंग इज एट इट्स माउथ it tends to deposit the sediments,
एंड ये जो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी इसको हम टर्मिनल मोराइन बोलेंगे, टर्मिनल मोराइंस, है ना। सो ये जो टर्मिनल मोराइंस है, तो दिस विल बी एक्टिंग एज ए बैरियर एक्चुअली फॉर दिस पर्टिकुलर वाटर। चाहे ये टर्मिनल मोराइन सेडिमेंटल डिपोजिशन हो सकता है, नहीं तो इसके ऊपर पूरा आइस जमा होके एक आइस डैम की जैसा, मतलब जमा होके इट विल रिप्रेजेंट लाइक एन आइस डैम। सो लाइक लेट्स से व्हेन द अर्थक्वेक्स ट्रिगर और व्हेन देयर शुड बी लैंडस्लाइड्स व्हिच वुड बी ट्रिगरिंग देम, है ना। तो अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट रिजल्टिंग इनटू फ्लैश फ्लड्स, ये जब होंगे इन जनरली, तो ये होने के कारण व्हाट वुड हैपन इज दिस पर्टिकुलर वाटर टेंड टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर डैम और मोराइन लाइक स्ट्रक्चर and tends to create the floods down adjacent. So that would be considered as a glacial lake outburst flood. Clear? So ये लिखने के बाद इसका continuation में लिखना जरूरी बनता है, क्योंकि 30-40 वर्ड तो मिनिमम इंट्रोडक्शन बनता है ना। And these glacial lake outburst floods generally result in flooding downstreams, creating geological and socio-economic impacts. Here, so इतना तो मिनिमम इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर और ज्यादा इंट्रोडक्शन लिखने की इच्छा है, लाइक फॉर एग्जांपल 50 to 60 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी बनता है वो आंसर में, तो ये आप लिख सकते हैं। लाइक व्हेन ग्लेशियर वुड बी रिट्रीटेड इन अ बेसिन लाइक स्ट्रक्चर, डिपॉजिट द सेडिमेंट्स कॉल्ड एज टर्मिनल मोराइंस वेयर which makes the glacier to melt in that region, which creates glacial lakes, and these moraines would be acting as a bridges or dams, and when there shall be some excess inducement of earthquakes, landslides and ignitions like cloud burst, the melted water within this particular glacial lakes tend to come out, creating floods in that particular region. So ऐसा introduction आपको बनाना पड़ता है। So ऐसा नहीं कि ये introduction मैंने जो लिखा है ये बेस्ट introduction है, ये इंट्रोडक्शन एक डायरेक्शन दे रहा हूं, लाइक ऐसा लिख सकते हैं। पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो कैन राइट बेटर इंट्रोडक्शन, एंड इफ यू वांट टू गेट वैल्यूएबल फीडबैक्स ऑफ राइटिंग द इंट्रोडक्शन, you can just drop it in the comment section regarding with the introduction which you have written. You would be getting the valuable feedback regarding with it. Clear? Moving to the body. बॉडी में मैंने ऐसा बोला था कि लाइक वल्नरेबिलिटीज के बारे में लिखना है, कुछ रिसेंट स्टेट केस स्टडीज और कब ऐसा बना है। तो इफ यू हैव सम फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग विद द रिसेंट इवेंट्स, यू कैन डायरेक्टली मेंशन देम विद इन द बॉडी। क्लियर? सो 13 हिमालयन स्टेट्स which have glaciers are vulnerable to glacial lake outburst floods. ये तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि 13 स्टेट्स ऐसा है जो हिमालयस के इन्फ्लुएंस में है, जहां पे ग्लेशियल इन्फ्लुएंस में है, and out of these 13 exclusively the western states like Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, out of these 13, 3 states are highly vulnerable, including Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand region, है ना। तो ये आपको लिखना जरूरी है। एंड रिसेंटली रिसर्च ग्रुप्स सेड अबाउट इंक्रीज इन vulnerability in Himalayan region,
in eastern Himalayan region. So it is not like ये 3 स्टेट जो भी हैं, इसी 3 स्टेट में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होंगे. मैक्सिमम यहाँ पे होने का चांसेस है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक disparities which would be present over here. But ये 13 हिमालयन स्टेट्स जितने भी हैं, यहाँ पे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होने का चांसेस मिलेंगे. सो रिसेंटली ए रिपोर्ट which have come out that have said regarding with the increasing of glacial lake outburst floods in the eastern Himalayan region also. In 1926, first glacial lake outburst flood was recorded, and in 2023 we have a recording of glacial lake outburst flood as such, you know. So how to tackle these particular glacial lake outburst floods? This is very, very important. If you could see, according to NDMA guidelines, see, आपका मन मर्जी लिखने की जरूरत नहीं है. जो भी एनडीएमए गाइडलाइंस दिया है तो अगर आप लिख लिए दैट वुड बी मोर देन एनफ. एनडीएमए गाइडलाइंस जो भी हैं, इस गाइडलाइंस को अगर आप लिख लिए दैट वुड बी मोर देन एनफ. ओके, सो एनडीएमए गाइडलाइंस में ये दिया है, पहले आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल dangerous lakes, identifying the potential dangerous lakes which are there. तो उसको पहले आइडेंटिफाई करो. ये बोला एनडीएमए ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में. आइडेंटिफाई करने से क्या होता है, लाइक समवेयर अराउंड 9500 से भी ज्यादा ग्लेशियर्स है इंडिया में. तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 200 ग्लेशियर्स हैव द लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ creating an outburst resulting into flood. So ये identify करने से what would happen is we can first focus upon those particular glaciers which have the highest potentiality of risk creation. Second is use of technology and real-time sensors to detect the flooding. So generally during the monsoonal phase, as everyone know, when excessive rainfall would be coming, वो कोई भी लेक हो वो तो फ्लड होगा ही. सो वो सीजन में ये रियल टाइम सेंसर्स टेक्नोलॉजी की यूसेज से, ये रियल टाइम रिकॉर्डिंग से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना. तो फ्लडिंग क्या होता है कि लाइक when we detect it in the igniting phase, we might not stop it, but at least we can reduce the impacts which would be created by the disasters. Next, what NDMA would be saying is channeling the potential floods. मतलब creating certain kind of canal systems, and in those regions where we have high risk effectiveness of creation of floods, वहां से वाटर पंप आउट करना, मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उसको रिड्यूस करना, पंपिंग आउट, ब्रीचिंग आउट और कैनालिंग आउट. तो ये करने से वो फ्लडिंग रोक सकता है. ये थर्ड गाइडलाइन है जो एनडीएमए ने दिया था. एंड मेंटेनिंग यूनिफॉर्म कोड्स फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, है ना. ऐसा नहीं कि एक जगह पे एक कोड दे दिया, एक जगह पे एक कोड दे दिया, एक जगह पे बिल्डिंग का परमिशन दे दिया, दूसरा जगह के पे बिल्डिंग का परमिशन नहीं दिया. मतलब पहले आप कैरिंग कैपेसिटी बोल के एक चीज होती है. एवरी रीजन, इफ यू सी द हिमालयन स्टेट्स, वी हैव सर्टेन रीजन्स व्हिच हैव ओनली लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटीज, बट इन दैट पर्टिकुलर रीजन दे वुड बी एस्टैब्लिशिंग ह्यूज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. सो फर्स्ट check the carrying capacities, draw the uniform codes and make stringent rules and regulations. Then beyond the carrying capacity, don't allow any developmental activities over there which doesn't trigger earthquakes or landslides. So by controlling these earthquakes and landslides also, we can control this particular glacial lake outburst floods as such. And next guideline which was given by NDMA is
enhancing early warning systems like prediction of earthquake को तो वैसे predict नहीं कर सकते, but heavy rainfall, cloud burst like situation, landslide का situation जो भी है उसको हम predict कर सकते हैं वैसे। तो ये early warning system से क्या होता है, फ्लड तो होगा ही होगा, बट उसका जो डाउन स्ट्रीम में जियोमॉर्फिक चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस और सोशो इकोनॉमिक चेंजेस जितने भी आते हैं, उसका जो consequences है that we can manage as such. Clear? So ये certain guidelines which have been given. Next one, next guideline, training local communities और manpower, है ना। सिंपली ये कॉन्सेप्ट है फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, है ना, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्ड करने से भी पहले वो लोकल कम्युनिटी अगर ट्रेंड है ऐसे चीजों को, सो दे वुड बी एक्टिंग एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैव ए ग्रेटर रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट एस्पेक्ट, वेयर बाय दीज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जनरली टेंड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द क्राइसिस situation and not becoming catastrophic event. So this is one particular aspect which we have to focus upon. Better land planning, and making slow movement of slope so like construction of retaining walls, fences as such, through which we can be making this particular slow down movement to be possible. So these are the aspects which we have to follow, and here in conclusion, so we have a significant aspect which we have to focus along this particular conclusion, whereby real-time monitoring, better enhancement, I'm sorry, better enhancement and early warning systems, artificial intelligence, involvement in monitoring and tasking, better infrastructure codes along hill area developmental program, है ना। So real time monitoring has to be done, better enhancement and early warning systems have to be managed. Artificial intelligence जो अभी नया कॉन्सेप्ट है, जो हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल करके रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड टास्किंग ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स कैन बी मेड पॉसिबल थ्रू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, where it can go beyond human capacity also sometimes, and better infrastructure codes along with hill area development program has to be made, so that the effectiveness of this glacial lake outburst floods along with the rest of the disasters can be managed. Okay, so there are certain criteria given by National Disaster Management Authority for each and every component of disaster. So once go through those particular guidelines given by NDMA as such, so that you can directly quote them in your answer writing while you would be writing the disaster management answers. Clear? So if you want to get your feedback for the answer, please you can drop the introductions and conclusions over in the comment box. You would be getting the valuable feedbacks. And if you want to get the entire answer to be checked, so please get in contact with the numbers, contact numbers which have been given, and you can just call them and send the WhatsApp as such, so that we would be helping you in transferring this feedback as soon as possible. Thank you for watching this video. Have an awesome day. Jai Hind.